Ambassador, Deputy Permanent Representative of India to the UN in New York, and in addition, he has served in Germany, Cape Town, Muscat, Bangkok, and Caracas. He is presently a distinguished fellow at TERI, the Energy and Resource Institute. We are happy to have you, sir. Next, as the next discussant, we have Captain Manisha Mohan Puri ji, and इनको हमने पिछले सेशन में सुना, जाना और बहुत कुछ सीखा. Her journey into aviation started way back in 1986 when she got a scholarship for 60 hours of free flying at the Bhopal Flying Club. She also went to the USA to complete her flying and got her a commercial pilot's license with instrument rating from Skywings Flight Training School in Dallas, Texas. Currently, she is the secretary of the International Organization of Women Pilots and also known as the 99s. As the third discussant, we have Smita Singh ji with us, who has been with the media for over past 17 years. She has worked in the field of print media, book publishing and education. And she has also worked with eminent newspapers such as Times of India, National Mail, and was the feature editor of erstwhile daily published from Bhopal Devi Post. We are delighted to have all of you, and I would request the panel to please unfold the conversation. Good afternoon. All I can say is by saying I read a powerful tale of survival, perseverance and will to live a life that was almost taken away from a hand in the worst terror attack in Belgian history. So we'd like to hear from Nidhi, her own story, and this book is all about that. And I would like to hand over the mic to ma'am. Thank you so much. First of all, thank you, Bhopal Literature Fest, the organizers, the publication team, the directors, the authors, the listeners, everybody who's a part of it for having me over and for having such beautiful personalities which uplifted me. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने भी बहुत कुछ सीखा है सुबह से अब तक. Life सीखने को कहते हैं. When I was young, small, then I grew up, I used to tell God, give me the best, सबसे अच्छा मुझे देना. और मुझे in return रात को सपने में आता था और ऐसा लगता था God बोल रहे अरे सबसे बेस्ट ही तो दिया है. फिर भी मैं बोलती थी नहीं मुझे सबसे बेस्ट देना. मुझे रियलाइज नहीं हुआ वो ऐसे क्यों बोल रहे थे. Until I met with a very tragic incident on March 22nd, 2016. I worked for Jerryways as a cabin stewardess, was a cabin manager. I used to take flights abroad, बाहर लेके जाती थी, लेके आती थी. ये flight मेरी थी ही नहीं. It wasn't my flight. मैंने इस flight के लिए 1 महीना I fought. मैंने झगड़ा किया. मुझे यही flight चाहिए. I don't know why. What was in my destiny? I do not know. Finally, when I got this flight, I was so happy. And the first person was my husband, who told me, पता नहीं क्यों, I feel like you should not go on this flight. And I said, 5 दिन की तो बात है, आ जाऊंगी. As she said, ना 5 घंटे, मेरे 5 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी. March 21st, I took the flight from here to Brussels, night halt, and then 22nd March 2016, I was to take the flight from Brussels to Newark. In the morning when I got up, ना सुबह उठ के आपको अच्छा लगता है, fresh लगता है. मुझे अजीब सा लग रहा था. I wrote in the book also. As she said that we have to take the briefing, we have to do the check of the aircraft. मैं briefing लेने नीचे गई और मैं रो पड़ी. और मेरे crew बोलते, why are you crying, ma'am? क्या हुआ है? मैंने कहा Jerryways is going to stop this operation because we were to go. हमने वहाँ से base change करना था. मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ ताकि सबको थोड़ा समझ में भी आए और easy भी है, right? तो मैंने सोचा कि ये जो
ऐसे फील क्यों ऐसे आ रही है? तो मैंने उनको बोला क्योंकि we are going to stop this operation from here and we will be shifting to Amsterdam. And I said, we will have mix of emotions and it will be our last flight from here to take off and things of this sort, so don't worry. I'm very punctual with time. Being an NCC cadet, being an army school student, I'm very, very punctual. So I saw that, I said, nahi, bus aa gayi, we have to be there. The bus dropped us to the basement, ground level. First is arrivals and then you have departures. So you go to level 2. So normally people take the elevators because you carry too many bags. 2, 3, 4 bags होते हैं आपके साथ तो आप आराम से रख देते हो, lift ऊपर ले जाती है. But because I'm always in a hurry, so I took the elevators. And along with me was Amit, my another colleague, the second senior most. And we reached level 2. Few steps I have taken, maybe from here to that desk where it is. And I could see something going up and then heard boom. At that time I didn't realize, मुझे नहीं पता लगा वो क्या था. मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, निधि, go and help. Because we are the first aiders on the aircraft. Anything happens to any of the passenger, we are the ones who take care of them. We go through this training. And the moment I was about to run, he held me from behind. पीछे से पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मुझे help करने जाना है. He said no. And only this communication, 5 seconds to 7 seconds communication, and I saw, people over there, they started crying. Like how my hands are shivering now, they were like, they didn't know, they were gasping for maybe breath. They wanted to run somewhere, they were howling, and I could see fear on their face, and the same fear was on my face. मुझे ऐसा लगा we will be stampeded because there was no place to go behind. The exit were either here or where the blast took place opposite side. I thought we will be no more. And by the time I was thinking this, there was one man, I wouldn't say gentleman because he wasn't gentleman. There was one man who was just 2 arms away from me. He yelled his last prayers, and that time I realized that we will not be anymore. Either we'll be fired or we'll be dead. मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा आता है ना, तो I always सबसे पहले उसी को याद करती हूँ. मेरे मुझसे सिर्फ कुछ निकलता है ऐसे, prayers निकलती है. I took the turn on the left, मेरे को थोड़ी space लगी. मेरे पास 3 bags थे, इसलिए मैं slow हो गई. I had 1 big check-in bag, I had 1 cabin bag, I have 1 laptop bag, and in that laptop bag I had my purse shoved in. I took the turn, and in that time he pressed the detonator. I would say I was lucky because the bomb, when it explodes, it goes like this. So this is the wave. So maybe I was at that angle where I was drifted up with that sound, with that wave, and I was landed up. बहुत दूर जाके मैं ऐसे जोर से गिरी और ऐसे पीछे गिर गई, लेकिन अपने आप को बोला, ओ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बस इतना ही बोला. I don't know after that whether I had some sense, whether I was alive, nothing. थोड़ी देर के बाद एक spark hit हुआ, थोड़े moments आए मेरे में, और ये बोल रही थी, दिमाग में ये चल रहा था, निधि, come on, get up. मेरे बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे थे, 8th के, फाइनल एग्ज़ाम था मैथ्स का. मैं बोला फेल हो जाएगा, उठो 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 उठो, अपने आप को बोल रही थी उठो. थोड़े दिन पहले मैंने एक सीरीज़ देखी थी डॉक्यूमेंट्री देखी थी ऑन बॉम्बे ब्लास्ट. वहाँ पर जो भी लोग रेलवे स्टेशंस पे मूव कर रहे थे, टेररिस्ट उनको गोली से उड़ा देते थे. मेरे दिमाग में आया मैं मूव करूँगी तो मर जाऊँगी, लेटी रहती हूँ. फिर दिमाग में आया एक ब्लास्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हुआ तो नहीं, मूव करो, कम ऑन, गेट अप, यू हैव टू. मैंने बोला मैं धीरे धीरे रेंग के जाती हूँ, लेकिन मुझसे मूवमेंट ही नहीं हो रही थी. मेरी बॉडी ऐसे लग रहा था नीचे की है ही नहीं. मैंने यूं करके टच किया, मुझे ऐसा लगा लेग्स है ही नहीं मेरे पास. मैं इतनी डर गई थी. मैंने बोला
बॉडी है नहीं, कैसे जाऊंगी मैं जिंदा कैसे रहूंगी. Then I tried, मैं कैसे तो करके बैठी. I sat down. The first thing what I saw was my legs, and I looked up, though it was fully, how would I say, मतलब सिर्फ अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था. मैंने थैंक यू किया गॉड को, एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प. I could see bodies, I could see people, but they were not moving. I thought I'm the only one in that pool of blood sitting, looking for someone to help. I called, excuse me, but कोई नहीं था वहाँ पर. मैंने भगवान को बोला ठीक है, मुझे किसी को तो भेजो, मैं कैसे तो बाहर निकलूँ. And somebody came in that time. He came and he helped me. He made me sit on that chair where the photograph of mine was taken by a photographer, Ketavan Kardava, which was viral later. It took me 3 hours. 3 घंटे तक मैं एक जगह से दूसरी जगह, एक स्ट्रेचर से एक कमरे में ले जाई जा रही थी. मेडिकल हेड बहुत बाद में मिला. मुझे पता था कि बाद में मिलेगा, बिकॉज देयर वर सो मेनी कैजुअलिटीज. जब कुछ ऐसा होता है तो कितने लोग होते हैं, वो भी देखते हैं कि किसको कैसे हम कैसे उठाएं. जब मैंने देखा कि मेरा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग गया, मैंने कहा अब मर जाऊंगी, अब नहीं ज़िंदा रहूंगी. तो मैंने किसी को बोला प्लीज़ मेरे यहाँ पर एक कुछ बांध दोगे, मेरी टांग पे कुछ बांध दोगे, जोर से बांध दोगे. Somehow we stopped the bleeding. Later on I got it. When I reached the hospital, they were talking, and first thing I was telling them, please inform, this is the number of my husband, 9820012791. Please inform him I'm alive. Please inform him I'm alive. And they were asking me relevant questions, and they cut open, I was fully nude. पूरा ऐसे खोल दिया था, यहाँ ये है, ऐसा किया है, वैसा किया, इसको ये लगाओ. So they were talking, and they told me, can you remove, I was wearing these bangles. They said, can you remove these bangles? क्या तुम इन्हें उतार सकती हो? और मैंने ऐसे जोर से जब उसको खींचा ना, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आई, तो मेरी सारी स्किन पील हो गई. फर्स्ट दर्द मुझे तब हुआ. I did like this. And then they realized that I am not a dark female. My entire body is burned. I'm not dark. And then they started talking, and when they were talking, I was listening. I got afraid. I got terrified. I was set back. I said, Mark, his name was Mark. I met each and every person who helped me later on. I said, is my face burnt? He said, totally. You're totally burnt. I said, I do not want to live. मुझे नहीं रहना. Because I did not know how people will take me. I will be always on the mercy of someone. I will not be able to do my job. Society will neglect me. They will say, you know, hota hai na? I don't know how my children will accept me, whether I'll be a burden to them. And after that, I was numb. I was put in an induced coma for 23 days. My surgeries were taking place. My things were so intense that they could not do anything. I had, once my heart stopped and they had to revive me back to the defibrillator. आपको shocks देते हैं वहाँ से. Doctor said, it is she wants to live, that is the reason. She is there. Had it been somebody else, would have not been survived now. My fever, temperature, 105. Lungs, पानी भरे हुए. Infection, highest. Blood pressure, highest. No medicine was sounding good on me. Nothing was happening. Finally, I opened my eyes one day. There is a story to that also in my book, because I cannot describe everything in those 40, 50 minutes. And when the first time I saw my children, and they saw me, and I realized how happy they are, even after looking at me. I was in such a bad condition. My face all burned, marked. My one eye, left eye, was smaller than the right one. I looked horrible. Literally, I looked horrible. I never wanted to see myself in the mirror. But somehow I used to, because I wanted to give confidence to them कि कुछ भी ज़िंदगी में हो जाए करो. Because हम अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं, फॉर्मूला तो सिखाते हैं, मैथ्स सिखाते हैं. लेकिन जब रियल लाइफ में आता है ना,
दूसरों के लिए हम दे सकते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, you will do it, कुछ नहीं होगा, you can go, but when it comes to you ना, उसे मेरे से तो नहीं हो सकता, पर मुझे उनको सिखाना था कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, if you are willing, if you have the potential, if you want to do it, if you love yourself, if you know the value of life, you will be able to do it. And after that, I did not look behind. And that is the reason I'm here today. I'm standing in front of you. I'm able to give you talk. So this is the brief of what my book is all about. It has started with a very, I would say, traumatized event, but it ends up, or in the middle, or later on, you will find it really soothing. You will find it that it has all elements of life. It has the beauty of life, why you are there. It will show you what is life is all about. जो मैंने sentence पहले बोला था ना, कि मैं God से पूछती थी, give me the best. I realized that time that He has given me the best. And you know what is the best? I'm talking to you. When I open my eyes in the morning, every morning, one new day, your family, you are with the family, you're doing something. But we do not realize the best. Think of a person like me, when I was in the induced coma, मुझे कुछ पता था, vegetable की तरह जी रही थी मैं. 25 kgs almost मेरा वजन कम हो गया था, थोड़े ही दिनों में. क्या था? Is that life? Nah. Life is when you enjoy, when you realize, when you think about yourself, when you think. एक poem हम लोग बोलते थे बचपन में, या prayer करते हैं ना स्कूल में. Thank you Lord for the world so sweet. Thank you Lord for the food we eat. Thank you Lord for the birds that sing. And thank you Lord for everything. You must thank Lord for everything. Nobody will beat you. Thank you. Mic check. That was very traumatic but inspiring, because the end result, you said you realize what life is and why are you here. Going forward with that, I want to ask you, while you went through that trauma, and there were days and months and years that you went through, bringing yourself back to life, what you are here today, sitting and writing all over again, bringing those same memories back, how did you cope that? Because one is to go through it and come out of it and forget it. But when you write, you actually are bringing each event back in your mind. Did it disturb you? Did you get traumatized then? Or were you able to bring positivity to your thoughts to bring that in your book? Can you tell us that? मैंने सोचा नहीं था मैं कभी बुक लिखूंगी, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था, कुछ भी नहीं. मैंने अपनी फैमिली को थोड़े दिन नहीं पहचाना था. मुझे क्या हुआ है व्हेन आई वाज इन इंड्यूस्ड कोमा, मुझे पास्ट का कुछ नहीं याद रहता था. आई वाज टेलिंग माय सिस्टर व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हर इन द हॉस्पिटल, ये 2012 चल रहा है ना, तो 4 साल मुझे कुछ याद नहीं था क्या हुआ. सो मैं डायरी के रूप में एक छोटा छोटा लिखती थी. आई यूज्ड टू राइट इट डाउन इन ऑन कैलेंडर. इतना आज ये हुआ, मंजीव सिंह पुरी जी आए, आज शैम्पेन बॉटल खुली थी, इस तरह से, मतलब छोटा छोटा. जब मैं उसको लिखना शुरू किया तो मेरी मम्मा ने देखा दैट यू नॉट ओनली आर, it's a therapy for you. You not only are accepting it, but you are acting very brilliantly. मतलब तुम उसको different way से देखती हो. She said, write a book. I said, who will read it? She said, you yourself will read tomorrow and say, मैं यहाँ से यहाँ तक आई, but you write it down. हाथ में पेन पकड़ा नहीं जाता था because of the graphs. मैं कैसे तो करके लिखती थी.
There were days when I used to just cry. I could not write one single thing. Because जैसा इन्होंने बोला, it was so difficult. इतना मुझे समझ नहीं आता था मैं उसको कैसे लिखूं. मैं खुद नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं खुद नहीं समझ सकती. कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी हम जा सकते, इतना भी मुश्किल आ सकती है. मुझे नहीं समझ आ रहा था. How would I write it? I felt really it was a setback for me. But there were people like Manjeev Singh Puri ji. There were people like Henry Paul. There were people like Alan. There were people like, 100 of them. I said, अच्छा भी तो हुआ है, तो वो क्यों नहीं? So it was a balance of both. To balance कि अगर ऐसा होता है तो ये भी होता है. So that's how I managed to write this all, but in a very brief way. It was indeed very tough for me. It was, लिखते लिखते आप कैसे हो जाते हो, मतलब you don't know what to do. But उसके बाद आपको ऐसा लगता है नहीं, मैंने जस्टिस किया, मैंने अच्छा लिखा. जब मैं अभी भी कभी मुश्किल में आती हूँ ना, when I come now, तो ऐसा लगता है अगर मैं वो सिचुएशन हैंडल कर सकती थी तो ये क्यों नहीं. So this is the power of writing. Nidhi, how should I tell you? Exactly 6 years back, on literally this day, 1 or 2 days here and there, this absolutely horrendous thing happened. और निधि जो यहाँ पर आपके सामने यूं हंस रही हैं, आपको भगवान के बारे में ये चीजें बता रही हैं, she is the living symbol of the kind of, let me say, test that anybody can be put through. And yes, she's spoken of her experience, but I can tell you what her family went through and the beautiful manner in which they coped is another aspect which at some stage perhaps she will talk about. आप लोगों को क्या बताएं, आप शायद समझ नहीं सकते what it means to be in an induced coma. हम लोग नहीं देख सकते थे, इनके हस्बैंड क्या देखते. It was as difficult as that. But निधि, मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहता हूं. आपने यहां भगवान के बारे में बहुत कहा, आपने good things about life के बारे में बहुत कहा. But I want to ask you, do you feel any rancor? Do you feel कि कुछ सिस्टम, कोई लोग, कोई ऐसी चीज, आपने एक छोटा सा रेफरेंस अपनी बात में कहा, and then he pressed the detonator. कभी आपको ऐसा लगा एक किस्म की घृणा about somebody else, शायद आप उसको जानते हैं, वो कौन है, क्या represent करता है, कभी आपको ऐसा फीलिंग हुई है? I just want to hear from you, because पॉजिटिव तो आपने बहुत कहा, लेकिन अंदर से बहुत थोड़े लोग हैं who have been the victims in the manner in which you were a victim and the way in which you've been able to come out and act as an inspiration to the most difficult of challenges, I know, to all these young children, but to all of us who are your contemporaries. कई लोग पैदा होते हैं जिनको दिमाग संतुलन की प्रॉब्लम होती है. हम उनसे घृणा नहीं करते, प्यार करते हैं. होते हैं ना स्पेशल पीपल. जब मैं उनको फ्लाइट्स पे भी देखती थी ना, मुझे तरस आता था, पर उनको नहीं. पेरेंट्स इतने प्राउडली, मुझे लगता था ये कैसे कर सकते हैं. मैं सच्ची में हाथ जोड़ लेती थी कॉकपिट में जाके अपने कि they are the best because they are taking care of such a person, right? Now, having those educated people, I don't know what is in their mind. दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको ब्रेन वॉश नहीं, उनको सोल वॉश करते हैं. ये वो ही कर सकते हैं जिनका ना तो हार्ट होता है, ना कोई आत्मा होती है, ना कोई रिलीजन होता है. क्योंकि कोई रिलीजन ह्यूमैनिटी से बढ़कर नहीं होता. वो यही सिखाता है भाईचारा, सदाचार, एक दूसरे के साथ प्यार.
That's what I feel, that when they do not have the sense to understand what is right and wrong, who am I to give them, you know, because they will not be able to understand where I'm talking from. They do not have that caliber to understand why they are born. They do not have anything. They have only one thing, revenge, end of their life, but they don't understand this. We should give each and everybody, एक दूसरे को चांस देना चाहिए, सुनने का, समझने का. कोई गलत कर रहा है तो रोकना चाहिए. हम करते नहीं हैं, हम रोकते नहीं हैं किसी को. हम सोचते हैं अच्छा गलत है ना, हो जाने दो, कोई फ़र्क नहीं, मेरे को क्या फ़र्क. यही फ़र्क है. अगर आप स्टॉप करोगे ना आज, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, ज़रूर बदलाव आएगा. एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से. निधि, बहुत अच्छा आपने कहा. आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड हर बुक एंड आई टेल यू, निधि ने अपने बारे में तो लिखा है, द ट्रिब्यूलेशंस, द ट्रायल्स, द डिफिकल्टीज, लेकिन एक बहुत अच्छी छोटी सी चीज वो हम लोगों के लिए, हमारी सोसाइटी में, सभ्यता में आज के दिन बहुत अच्छी है. इनका मुंह बोला भाई ब्रसल्स में, नॉट एनी ऑफ अस, नो मेंबर्स ऑफ द इंडियन एम्बेसी, नथिंग. ये लोग तो फ्लाइट लाते थे. एट एनी गिवन टाइम 4 एयरक्राफ्ट जेट एयरवेज के सुबह 7 से 9 बजे तक ब्रसल्स एयरपोर्ट पे रुकते थे. करीब उस पर्टिकुलर दिन 1000 पैसेंजर्स इंडियन थे वहां पर. ये और इनके एक साथी के साथ बहुत इंजरी हुई. वी लॉस्ट अ बॉय इंसिडेंटली. वी लॉस्ट एन इंडियन हु वाज नथिंग टू डू विद द एयरपोर्ट but was stood on top of the bomb by bad luck in a metro line. It was blasted apart. लेकिन आप नोट करिएगा, ये लोग रेगुलरली ये फ्लाइट जाते थे. निधि ये फ्लाइट इसलिए लेना चाहती थी कि इसके बाद जेट एयरवेज की फ्लाइट यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बंद होने वाली थी. वो एक एग्रीमेंट था उस समय का. लेकिन इनका मुंह भोला भाई, जो इन लोगों को होटल में हमेशा मिलता था, इनकी दोस्ती, और इन हर मोस्ट ट्रॉमेटाइज्ड मैनर हस्बैंड का नंबर दिया और उसका नंबर दिया, और वो इनके साथ पूरे 20 दिन लगातार, उससे ज्यादा रहा. निधि, उसके बारे में बताओगा. मेरी फर्स्ट फ्लाइट ना 2006 में लैंड की थी ब्रसल्स में, तो हमें होटल दिया था सेंट्रल में. तभी मेरी बेटी 18 मंथ्स की थी. मैंने फर्स्ट टाइम अपनी बेटी को तब छोड़ा था. मोबाइल तो था नहीं मेरे पास, ना मैं इतना, ये मेरे को तभी वाईफाई इतना समझ नहीं आता था. तो सामने पीसीओ था, तो मैं वहाँ गई, मैंने बात की, तो मम्मा 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 कब आओगे मम्मा, तो मेरा रोना निकल गया. मैं बाहर निकली तो उन्होंने देखा, उनका नाम है शब्बीर भाई, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज सेटल्ड इन बेल्जियम. तो वो बोले, बहन जी ठीक हो ना, बिकॉज मैं आउटफिट हमेशा पंजाबी नॉर्मली, तो मुझे लोग ऐसे देखते थे कि ऐसे पहनती है. तो बहन जी ठीक हो? मैंने कहा हाँ, मैंने बच्चे से बात की, चाय पियो. तब से लेके अब तक मैं उनके साथ हमेशा, जब भी जाती थी चाय पीना, घर पे जाना, हम घूमने भी गए मेरी फैमिली वहाँ पर, तो वो हमको 4 दिन घुमाए. कौन करता है किसी के लिए? 4 days इन देयर कार. हम कहाँ कहाँ गए थे. जब मैं हॉस्पिटल पहुँची ना, मैंने बोला मुझे नहीं पता जेट एयरवेज से कोई आएगा क्या नहीं आएगा, मुझे ये भी नहीं पता कि और कौन आ सकता है, लेकिन शब्बीर भैया ज़रूर आएंगे, ये उनका नंबर है. मैंने वहाँ पर, उन्होंने मेरे को एक तस्वीर खींची जो मेरी बुक में है, उन्होंने ही भेजी थी. उन्होंने बोला ज़रूर डालना, कि पता लगना चाहिए लोगों को कि ऐसी हालत भी होती है, तो शायद लोग कुछ समझ जाए. उन्होंने बोला कि एक टैग लगा था जिसमें तेरा नाम था, रुपेश का मोबाइल नंबर था और मेरा नाम था, और क्योंकि तूने रिसेप्शन पे ही सबको पता था कि सिर्फ एशिया की एक ही, मतलब जो थोड़ा ये फेयर कलर होते हैं या कुछ, तो उन्होंने बोला एक ही लड़की. जब मैं पता करने के लिए गया कि यहाँ पर ये है, तो उन्होंने बोला शब्बीर भाई, हाँ उसने बहुत जिक्र किया था, आप आइए. तो उनको लगा कि मैं ठीक होंगी, मैं वहाँ जाऊँगी जब भी, तो मैं एकदम से मेरे को ले आएंगे. तो बोला वो टैग लगा था, तो मैं पहचान पाया कि ये तू, पहचान मतलब कि मैं आइडेंटिफिकेशन करते ना कि हाँ ये वही होगी. मेरी सिर्फ आंखों की लिड्स दिख रही थी, बाकी सारा मुझे कवर करके रखा था. वहाँ पर कर्फ्यू लगा था, लेकिन उसने तभी कोई
ये नहीं देखा कि मैं यहाँ का हूँ और ये वहाँ की है, या इन्होंने ये किया है, नहीं, उन्होंने ह्यूमैनिटी देखी। सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, मेरे हस्बैंड को बोला मैं जाता हूँ, देख के आता हूँ, और देख के फ़ोन किया, भाई मेरे जल्दी से आ जा, बस इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला। मैंने देख लिया है पर तू जल्दी से आ जा, मेरे पहचान में नहीं आ रही है। So this is what humanity I was talking about, relationships. Thank you so much, ma'am. We would like to open the floor for questions from the audience. If you have a question, please raise your hand. Yes, right there. Cordless. Yes. Yes. Please pass the mic to Kaniz Zehra Razavi, ma'am. Nidhi Chaphekar from, I'm a freelance non-fiction editor. I want to ask you one question, and that is, did you at any time in the entire experience feel that being an Indian was in any way good or bad or indifferent to the care that you got? Number one. To the care that you got. I also want to mention to you that your book, which I read in March of 2020 in Ahmedabad during the lockdown, changed my life, because the King of Brussels said, "Can we dare to forgive?" That changed my life. But I want to know whether you felt any kind of difference in the care that you received while you were there. Thank you. नहीं, इसका एक ही शब्द का आंसर है कि ऐसा कुछ नहीं। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं उस कंडीशन में यहाँ होती तो आज इस मंच पे नहीं बैठी होती, एक बोर्ड लगा होता, निधि चाफेकर सो एंड सो, दैट्स इट। द केयर आई हैव गॉट ओवर देयर, जो उन्होंने किया, उन्होंने सबके लिए इक्वल किया, किसी को नहीं डिस्क्रिमिनेट किया। इवन he had come to see me, and you know what? The hospital people, they were so amazed. They said this hospital was inaugurated by his father, King's father, and he had come, and King has specially come to see you and meet my husband. So that is kind of relationship they built. They were sorry. They wrote a letter to me. They said, until today, even some of the police people I know, they have written so much about. They always find, if you will see my Facebook, it will be a message on, always on 22nd from few people. Sorry, the incident had happened in my country. I'm really 1,000 times sorry. उनको English लिखने नहीं आती है इतनी, French बोलते हैं, Dutch बोलते हैं, लेकिन फिर भी try करते हैं। हम किसी को करते हैं क्या? यही मैं बोलती हूँ कि जगाओ अपने आप को, करो, वो करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे. So do that. So I have never felt, they were so superb, and the king told me that you were very unfortunate that the thing has happened to you, but let me assure you that it was so fortunate that you've been here treated. Wonderful. Smita ma'am has a question as well. I had this question in mind for you. You made such an effort, like you said, you fought for 1 month to get on that flight. So do you ever feel you were at the wrong place at the wrong time, or this was a wrong decision? Did you ever feel, or do you ever feel even now? वो फ्लाइट ना मिस डिसूजा की थी, सर जानते हैं उसको, विकास जी जानते हैं. That was her flight, and she was to get married in October. Till date, she thanks me. She tells me, अगर तू नहीं होती ना, तो शायद ना मैं बची होती, ना मेरी शादी होती, because till today, every person who has met me, who knows me, who know my condition, who has read this book, or from my family or from my organization, you know, they've always said, just because she is Nidhi, and I'm not exaggerating on that, she will make it. अब मेरी आंखें नहीं खुली थी. She is Nidhi, she will make it. अगर कोई और होता तो हम कुछ नहीं कह सकते थे. So it was not a wrong decision, neither a right decision. It was to happen, so it has happened. So I look forward to this, that I saved someone else's life being there. Yes. We can have 2 quick questions from the audience. We are running out of time. 2 quick questions from the audience. Anyone who has a question, please raise your hand. Quick questions from audience. Anyone has a doubt? Has a query?
I think all of them are so touched by the story. Yes, one gentleman there. Yes. Hello. My name is Yash Nagalia. I'm from Sistek University. My question is, do you have any words for the people, the terrorists, any advice or any words for them? If you ever meet them, anything you want to say to them to change their mind or anything? As I said, कि ना तो उनको कुछ समझ आता है, नहीं तो वैसा करते नहीं, लेकिन फिर भी, just because you've also said, let me mention you that, वहाँ एक hearing होती है, क्योंकि 3 terrorists थे जो आए थे, 2 ने blast किया था, तीसरा उनका brother था, cousin. उसने 25 kgs RDX हमारे काउंटर के सामने बैग में रखा था. He wanted to press, but I don't know what changed his mind, and he walked off. He's in the jail. I have put an application to meet him and ask him this question because this is also so. मतलब मेरे को ऐसे कुरेदता है कि क्या चेंज आया होगा, मतलब कहीं कुछ थोड़ा सा उसमें होगा कि वो चला गया शायद अपनी लाइफ को लेके, मुझे नहीं पता. So एडवाइस मैं तभी दे सकूंगी जब उसका माइंड सेट पढ़ सूंगी. That's it. Thank you so much, dear ladies and gentlemen. Okay, quick question, please. A quick question and a quick answer. Nidhi, now have you become more daring? Do you take many risks after coming out of this, trauma and being survived so much? मैं ऐसी ही थी, पहले से ही ऐसी थी, मैंने कुछ चेंज नहीं किया. I was like this and that's the reason. My husband, if he is यहाँ पर ये बैठे हैं, ये गवाह है. वहाँ पर एक लेडी थी जिनके हाथ और फेस बर्न हुआ था, मार्टिन. वो 2 बार मुझे इंडिया मिलने के लिए आई. क्यों? बिकॉज आई वॉज इन इंड्यूस्ड कोमा एंड शी वॉज रिलीज्ड, और मैंने उसके बाद अपनी आंखें खोली थी. माई हस्बैंड यूज टू टेल, जिस दिन इसने आंख खोल दी ना, दुनिया देखती रह जाएगी. यू विल सी हर बैक स्टैंडिंग. वो सोचती थी ऐसा क्या है इसमें. शी केम 2 times टू मीट मी. सो आई एम लाइक दैट ओनली. अगर तुमने अपनी लाइफ में कोई रिस्क नहीं लिया, तुम आगे बढ़ोगे ही नहीं. रिस्क तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, यहाँ से उतरने के लिए भी रिस्क लेना पड़ेगा. सो इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ फुली, ओनली गो विद वन माइंडसेट, पॉजिटिविटी. दैट्स इट. Everything will be killed behind. Thank you so much. And now I would request the director of Bhopal Literature and Art Festival, Raghav Chandraji, to please go ahead and present a memento to our author and discussants for this session. Zordar taaliyan honi chahiye. As Nidhi ji previously said, the beauty of being a human is to be able to handle each and every situation, and she definitely lives by her words. It was an inspiring story, an inspiring session for all of us. Thank you so much, Nidhi ji. And there is a tribal art painting created by Padma Shri Bhuri Bhai ji based on tribal art. And we also have mugs for our discussants. It was a delight to have Manjeev Singh ji, Manisha ji and Smita ji with us as discussants for this incredible session. Thank you so much, everyone.